स्वागत है सर आपका वापस से हमारे एक नए एपिसोड में। थैंक यू। और आज के इस एपिसोड में आपके लिए जो सवाल हमारे एक ऑडियंस ने दिया है, दैट इज माय आर्किटेक्ट इज रिकमेंडिंग ओनली नेक्सॉन टाइल, इज इट द ओनली बेस्ट टाइल? The question has two words, only and best. So it could be either one, right? So saying something best is difficult because there are always equivalent or better tiles. See, Nexion is basically a joint venture company of Simpolo Tiles, and they have created quite a premium image for the brand. Their pricing is also quite premium, and I've seen their products. Products are also good in a sense that the palette that they have chosen, the finishes and all those things, that they have done a good job. So they have been able to create a good perception, and they are good. Definitely, right? But calling it best, as I said, it will depend on 3 or 4 factors. What is your intent? What is your application? According to you, what qualifies to be the best? So if you're for an architect, the premium image and the premium price and the premium design means the best, then yes. But as far as the designs are concerned, you will get similar designs, because it's not a rocket science to create in the modern technology. It's not that only someone has got the same technology. But most of the leading brands have. As for my knowledge, I think Nexon is making only big sizes, right? From where the big starts? 2x4? Yeah, 2x4 they are doing. The bigger the tile, and the perception is that better is the tile. So, or the more premium is the tile. 8x4 में भी थे और Yes, उससे yes. बड़े साइजेस में कुछ थे। See, 8x4, lot of people are making. Okay. Johnson is there, Kajaria is there, Somani is there. A lot of people are making 8x4 and 6x4. So Nexion, you can definitely go. The architect's choice is good. It is a premium image style and quite charming finishes. And what makes you happy. And if you get the choice of your tile, the shades and all those things, and if it fits into your budget, there's no harm in listening to your architect. तो सर ये क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में अगर बात करें तो क्या उसमें कुछ मतलब एड ऑन मिलेगा प्रीमियम पे करने पे, या क्या है? If you take any branded tile, right, and if you see their brochure or the catalog or technical specification, करेक्ट। they will be same. So on what basis I say that someone is better than other? It is the consistency of the quality, consistency of the performance of the tile, and which can change batch wise also. Brand एक आपको भरोसा देती है. If something goes wrong, there is someone who is answerable, someone who will attend to you, someone who will explain why it has happened. Because 90% of the time what happens, some problem comes, and then customers also feel कि ये तो बोल के चला गया as per the international standards or BIS, everything is within the tolerance limit. This is a standard thing, right? Which people hate. और ये भी बात सही है कि सारी प्रॉब्लम टाइल के कारण नहीं आती. बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द टाइल, एंड बाकी की जो बची प्रॉब्लम आती है वो आती है रॉन्ग इंस्टॉलेशन. तो ड्यूरेबिलिटी में अगर मैं बोलूँ कि नेक्सियन की ड्यूरेबिलिटी कजारिया से, जॉनसन से, सोमानी से बेटर है या कम है, ये ठीक नहीं होगा. ड्यूरेबिलिटी के जो पैरामीटर है उनमें बात करना चाहिए. ओके, है ना. तो ड्यूरेबिलिटी के जो टेक्निकल पैरामीटर है, whosoever is giving that value under those parameters, and whosoever is taking the accountability. yes. ब्रांड का मतलब ये भी होता है कि जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उसको पूरा करूँ. वो मैं डिलीवर कर रहा नॉट दैट मैंने कुछ भी फैंसी नाम लिख दिया और ब्रांड हो गई. राइट. आई थिंक बहुत प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं नेक्सॉन वाले, जितना मैंने सुना है. देखो, आपको क्या लगता है, अगर किसी प्रोडक्ट को आपको प्रीमियम में एस्टैब्लिश करना है तो आप उसको सस्ते में बेच के कर सकते हो क्या? नेवर. सो सी, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइसिंग इज प्रीमियम द प्रोडक्ट इज प्रीमियम. सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट, दिस इज द ओनली बेस्ट, it depends on what you are looking for. If you have liked some design, some surface, right, in particular size, and only Nexion is making, in your parameter, this is the best. Don't worry about the quality of Nexion. Then, durability and all those things will be taken care of, right? Yes. All the brands take care of, right?
But if you are thinking, no, my budget is this, and still I want a light grey color, I am liking these 4 or 5 similar tile, this style from Johnson, this style from Kajaria, this style from someone else, Yes. but still, is it compulsory to go for Nexion because it will be more durable? That will be wrong perception, and that will be injustice to other brands to say that they are less durable. It's not that. तो अगर मान लीजिए मेरा बजट उतना नहीं है और मुझे वैसे ही फिनिश में कहीं और से टाइल्स मिल रही है, तो इज इट ओके इफ आई एम बाइंग फ्रॉम सम अदर ब्रांड? या प्रॉब्लम किसी में भी आ सकती है, ये याद रखिए. तो ब्रांड वहीं काम आती है जब प्रॉब्लम आती है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखो काफ़ी कम है ना. डिज़ाइन का डिफरेंशिएशन भी बहुत कम है. वो सारी चीज़ें डिमिनिश हो चुकी हैं. इट्स अ गुड टाइल. सो अगर आपके भी हैं कुछ सवाल, तो आप हमें यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे अपने सवाल भेज सकते हैं. कीप वॉचिंग अस, और हम आपके लिए OTF के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में वापस से लेके आएंगे और एक नए सवाल के साथ में एक नया एपिसोड, जिसमें हो सकता है कि अगला सवाल आपका ही हो. Please do like, share and subscribe to our channel, and thank you so much, sir, once again for joining us and giving your time and this valuable information about these questions. Thank you, Adil. Thank you so much. Thank you, so much audience. for watching us. Thanks. Thank you.